Welcome to the Manikarnika YouTube channel for the 5th class of Indian mapping. In the previous class, we talk about Mizoram. Okay, we talk about Northeast India at this page. Okay, I will be zoom out in the Northeast. This is map of Northeast India. Okay, 8 states are included in the Northeast, which is Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim. Okay, 7 sister and 1 brother. Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, and Sikkim. Okay. Today we talk about Manipur. In the 4th class we talk about already Mizoram, and in 3rd class we already covered Tripura. Okay. Let's talk about Manipur. Manipur share international boundary with Myanmar. Okay. Eastern side, Manipur share eastern and southeastern boundary. Okay, eastern and southeastern boundary with Myanmar. Okay, this length, Manipur share boundary with Myanmar, and this boundary length is 352 kilometer long. Okay, this boundary is 352 kilometer long. Okay, and Manipur share internal boundary and national boundary with 3 states. One is Nagaland, second is Assam, and third is Mizoram. Okay. North boundary, Manipur share north boundary with Nagaland, west boundary with Assam, and south boundary with Mizoram. Okay, so Manipur share with boundary with Nam states. Okay, Nagaland, Assam, and Mizoram. Okay, Nam states, and 352 kilometer long boundary share with Myanmar. Okay, this is physical map of Manipur. Okay, in this map, see brown color so mountains in physical map. So 90% of Manipur is hilly area. Okay, Manipur's 90% area is hilly area. See in this map already. Okay, and this is the physical map of Manipur. In the Manipur are 16 districts. Okay, see this is Senapati district. Okay, number 1. This is Lekhrul district, Kamjong district, Kangpokpi district. Okay, Prorompat district. Okay, and this is Imphal West district. Okay, number 6 is Imphal West district. Number 7, Tamenglong district. Number 8 is Noni district. Okay, number 9, Jiribam district. Number 10 is Ferejawal district. Number 11 is Surachandpur district. Number 12 is Sandel district. Okay, number 13 is Tengaupal district. Number 14 is Kankinj district. Number 15 is Solibal district. Okay, Sobal district. And number 16 is Bisanpur district. These are 16 states of Myanmar. Okay, number 1 Senapati. Number 2 is Lekhrol, Kamjong, Kangpokpi, then Porompat,
Imphal West, Tamengpong, Noni, Jiribam, Hedjawal, Surachandpur, Chandel, Teng, Tengolipal, okay, Khagchipar, Thobal and Bisanpur. Okay, then we clear this map and mark some locations, some important locations in the your map. Open your map and see location number 1 is Imphal. Okay, Imphal, capital city of Manipur. Okay, location number 1 is Imphal, capital city of Manipur. Mark something here. Location number 2 is Loktak Lake. Location number 2 is Loktak Lake, which is a रामसर वेटलैंड, विच इज ए रामसर वेटलैंड. ओके, मणिपुर में एक ही रामसर वेटलैंड है जो कि लोकटक लेक है. और मार्क लोकेशन नंबर 2. ओके, मार्क समथिंग है लोकेशन नंबर 3. सॉरी, लोकेशन नंबर 3 इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. लोकेशन नंबर 3 इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. ओके, मार्क समथिंग है लोकेशन नंबर 4. लोकेशन नंबर 4 इज सिरोही नेशनल पार्क या सिरोही नेशनल पार्क. ओके, वन रामसर वेटलैंड which is mark location number 2, which is Loktak Lake. Two national park, mark number 3 and number 4. Number 3 is Kebul Lamjao National Park and number 4 is Sirohi National Park. Okay, mark something here. Number 5. Number 5 is East Manipur Hills. Okay, number 5 is East Manipur Hills, and Manipur Hills make border with something here. Manipur Hills make border with India and Myanmar. Okay, make border between India and Myanmar. Mark something here. Number 6. Number 6 is Limetol range. Okay, number 6 is Limetol range. Number 6 is Limetol range. And mark one river here. मणिपुर में साउथ की तरफ फ्लो होती है. ये फ्लोइंग डायरेक्शन है. दिस इज मणिपुर रिवर. ओके, लोकेशन नंबर 7 is Manipur River, and Manipur River joins Meitha. Okay, Meitha River. Meitha River, which about Meitha River and name of Meitha River see in slides. And Meitha River joins Chandwin River, and Chandwin River joins Iraude River. Okay, Chandwin River tributary of Iraude River. Okay, then see again 7 locations in Manipur. Location number 1 is Imphal. Location number 2 is Loktak Lake, which is a Ramsar wetland. Location number 3 is Kebul Lamjao National Park. Location number 4 is Sirohi National Park. Location number 5 is East Manipur Hills, which is make boundary between Myanmar and India. Location number 6 is Limetol Range, and location number 7 is Manipur River. Manipur River joins Meitha River, and Meitha River joins Chandwin River, and Chandwin River tributary is a tributary of Iraude River. Okay, when we covered Northeast India, after that we talk about all rivers of Northeast India, all river system of Northeast India, and see in detail like Brahmaputra river system, Barak river system, Manipur river system. Okay, जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरी तरह से कवर कर लेंगे तब हम उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नदियों के बारे में देखेंगे, और उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बराक नदी तंत्र, मणिपुर नदी तंत्र के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, तो mark 7 locations and observe them. Number 1 is Imphal, number 2 is Loktak Lake, number 3 is Kebul Lamjao National Park, number 4 is Sirohi National Park या सिरोही नेशनल पार्क, नंबर 5 is East Manipur Hills, number 6 is Limetol Range, and number 7 is Manipur River. Okay,
Loktak Lake surrounded by hills. Okay, Manipur hills and Limestone range, and Manipur river flow between two hills. Okay, flow between valley, or this is Imphal Valley. Okay, Manipur is a hilly area, and this Imphal region is valley region. So major population lived in here. Okay, and 75% geographical area covered with forest. Okay, forest area का 75% geographical area forest है, and 90% area हिली रीजन। ओके, तो मेजर फॉरेस्ट एरिया इन हिली रीजन, मेजर फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? हिली रीजन में पाए जाते हैं। ओके, हिली रीजन में है। ठीक है, सी इन दिस मैप रिवाइज लोकेशंस, दिस इज लोकटक लेक लोकेशन नंबर 2, and something here number 1 is capital city of Manipur is Impal. This mountain range Limestone range is number 6 in the location. Okay, this East Manipur hills number 5 in the location, and something here number 3 is Kevulamjau National Park, number 4 is Siroi National Park, and this river is Manipur river. This river is number 7. Okay, and Manipur river joins Meta river. Meta river is joins Chindwin river. Chindwin river is a tributary of Iraudi river. Okay, then see in the slides about Manipur. Okay, see about Manipur. Capital Imphal city. Imphal is a capital of Manipur, which is marked in the map number 1. Okay, location number 1 already marked in the map. Area of Manipur is 22,327 kilometers square. Okay, 22,327 kilometers square, and its 90% area is hilly area. Its 90% area is hilly region, and 75% area is covered with forests. Okay, 75% area covered with forest, and 90% area is hilly region. Okay, according to 2011 census, population of Manipur were 28.6 lakh. Population of Manipur were 28.6 lakh. Okay, roughly 28 lakh. And when published data of population census data of 2027, then we will cover latest data. Okay, and official language of Manipur is Manipuri language या Meitei language. Okay, official language of Manipur is Manipuri language, and Manipuri language added in the 8th schedule of the constitution by the 71st constitutional amendment of Act of 1992. Okay, with two other languages, which is Nepali and Konkani. Okay, Manipuri language added in 8th 8th schedule of the Indian Constitution by the 71st Constitutional Amendment Act of 1992, with two other languages, which is Nepali and Konkani. मणिपुरी भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया, और इसके साथ दो अन्य भाषाओं नेपाली एवं कोंकणी को भी 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ओके, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ओके, इन मणिपुर 16 districts politically, which already seen in the map, which were already seen in the map. Okay, and meaning of Manipur is land of gems. क्या gems मतलब रत्न, एक टाइप का पत्थर होता है, रत्न टाइप का, एंड ज्वेलरी पत्थर माना जाता है, ज्वेलरी स्टोन। तो लैंड ऑफ
जेम्स, रत्नों की भूमि कहा जाता है। ओके, मणिपुर लैंड ऑफ जेम्स, रत्नों की भूमि। ओके, देन talk about bordering country and states. Okay, see, one second. Bordering country. Okay, 1 minute. Okay, already talk about bordering country in map. Manipur share international border with only one country, which is Myanmar, and Manipur share east and southeast side border with Myanmar, which is 352 kilometer long. Okay, and Manipur share internal border with Nagaland, Assam, and Mizoram. Manipur share north border with Nagaland, west border with Assam, and southwest border with Mizoram. Okay, south and southwest border with Mizoram, and we already see in the map. And you you all see in map and observe the locations. Okay, let's see about physical features of Manipur. Okay, two major regions in Manipur. One is Imphal Valley region and second is surrounding hill regions. Okay, major population in हिल इम्फाल वैली रीजन में रहती है और सराउंडिंग हिल रीजन में फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स रहती है। ओके, लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और विच इज ए रामसर वेटलैंड। ओके, लोकटक लेक एक रामसर वेटलैंड है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड लोकटक लेक ऑलरेडी मार्क नंबर 2, लोकटक लेक को नंबर 2 मैप में ऑलरेडी मार्क किया गया है। ओके, हमने मार्क कर लिया था, तो लोकटक लेक ऑलरेडी मार्क नंबर 2 in the map, location number 2. Okay, largest freshwater lake in the northeast India, and Loktak Lake is a Ramsar wetland. Okay, एक रामसर वेटलैंड है। लोकटक लेक में नाव के ऊपर झोपड़ी टाइप बनी हुई होती है और वो झोपड़ी फ्लोटिंग होती है, यानी कि पानी में तैरती हुई झोपड़ी बनी हुई होती है, उसे फुमडी कहा जाता है। ओके, इन द लोकटक लेक some floating islands are here. In Loktak Lake found some floating islands called as fumdies. Okay, floating island called as fumdies. Unique features of Loktak Lake. Okay, in the Loktak Lake some floating islands are found. These are called as fumdies, and these are unique features of Loktak Lake. Okay, and Kebu Lamjau National Park located near to the Loktak Lake, and which is marked location number 3 in the map. Okay, which is already marked location number 3 in the map. Kebu Lamjau National Park located near to Loktak Lake, situated near to Loktak Lake, and due to floating island and Fundij, Kebu Lamjau National Park also called as floating national park. Okay, also called as floating national park, and only one floating national park in the world, which is Kebu Lamjau National Park. Okay, Kebu Lamjau National Park दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। ओके, मेन रिवर इज मणिपुर रिवर, जो कि साउथ की तरफ फ्लो होती है, फ्लो साउथ इनटू म्यांमार, साउथ से होते हुए म्यांमार में एंटर करती है और ज्वाइन करती है मेथा रिवर को। मेथा रिवर आगे चलकर चिंडवेन रिवर को ज्वाइन करती है और चिंडवेन रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी रिवर। ओके, Chindwin river is a tributary of Irrawaddy river. Okay, and about river system we talk later when northeast India is finished. Then we cover all rivers of northeast. Okay, talk about hills.
some part of Naga Hills are in Manipur. Some part of Naga Hills are in Manipur, and major hills in Manipur are Manipur Hills, which is form boundary between India and Myanmar. Manipur Hills form boundary between India and Myanmar. Okay, Manipur Hills form boundary between India and Myanmar, which is already seen in the map. Okay, and Limatol range, which is marked in the map location number 6. Okay, Limatol range, which is already marked number 6 in the map. Okay, so in Manipur, climate is tropical monsoon, warm type climate, humid and heavy rainfall देखने के लिए मिलती है. In all northeastern states are under influence of heavy rainfall. Okay, due to tropical monsoon climate. Okay, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में अधिकतम वर्षा देखने के लिए मिलती है, और इस टाइम असम में बाढ़ की सिचुएशन कंडीशन बनी हुई है, और असम के लोगों के लिए, वहां के लोगों को मदद की जरूरत है, और वहां बाढ़ की भयंकर भयानक स्थिति बनी हुई है. ओके, एट प्रेजेंट इन असम फ्लड सिचुएशंस ड्यू टू हेवी रेनफॉल. ओके, so heavy rainfall is a features of all northeast India. Okay, then talk about economic and agriculture features. Okay, first talk about agriculture features, then economic. Okay, rice is the principal crop, and other crops are maize, मक्का, mustard, सरसों, sugarcane, गन्ना, pulses, दालें and fruits. Okay, rice is the principal crop, and other crops are maize, मक्का, मस्टर्ड या सरसों, शुगर केन, गन्ना, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, फल, ये सब होते हैं. एंड जूम कल्टीवेशन इन हिल्स. ओके, जूम कल्टीवेशन is a type of agriculture. In zoom cultivation, okay, forest cut down and burn, and forested land change into the agricultural land. Okay, via cut down the forest and burn it. So zoom cultivation is challenge for forest growth. Okay, जूम कल्टीवेशन इन हिल्स, मणिपुर में जूम कल्टीवेशन भी देखने के लिए मिलते हैं. बैम्बो एंड टीक इंपॉर्टेंट है. बैम्बो एंड टीक, एग्रीकल्चर में बैम्बो एंड टीक. फिशरीज, लोकटक लेक में फिशरीज देखने के लिए मिलती है, एंड 52% फिशरीज प्राइमरी सेक्टर में आती है, जो कि इकोनॉमी में बात करेंगे. एंड 52% या मोर देन 50% वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ओके, राइस प्रिंसिपल क्रॉप, मेज, मस्टर्ड, शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट्स, जूम कल्टीवेशन, बैम्बो एंड टीक इंपॉर्टेंट. फिशरीज लोकटक लेक में देखने के लिए मिलती है, एंड 52% वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ओके, बात करते हैं इकोनॉमी की. इकोनॉमी एग्रेरियन टाइप की इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड, खेती पे बेस्ड इकोनॉमी है. ओके, और क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस मेजर है, मेज, मस्टर्ड, शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट, बैम्बो, टीक. ओके, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंपॉर्टेंट है. गेटवे टू द ईस्ट इज मोरे बॉर्डर. ओके, मोरे बॉर्डर म्यांमार एंड इंडिया के बीच की बॉर्डर को मोरे बॉर्डर कहते हैं, और एक गेटवे टू द ईस्ट, ईस्ट साइड का गेटवे है. ओके, गेटवे टू द ईस्ट इज मोरे बॉर्डर, और यहाँ से ट्रेड देखने को मिलता है, इसलिए ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है. इकोनॉमी डिपेंडेंट करती है मोरे बॉर्डर पे. ओके, बॉर्डर ट्रेड विथ म्यांमार वाया मोरे बॉर्डर. ओके, वाया मोरे बॉर्डर, बॉर्डर ट्रेड विथ म्यांमार वाया मोरे बॉर्डर. forestry and tourism potential, forestry and tourism potential, hydroelectric potential. Okay, hydroelectric potential. 90% मणिपुर आर हिली ट्रैक्ट है, हिली एरिया है, तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की संभावनाएं बढ़ जाती है. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज आर इंक्रीज ड्यू टू हिल रीजन. ओके, देन टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड protected areas. In Manipur, biosphere reserve no, none, कोई biosphere reserve नहीं है. Tiger reserve none, no tiger reserve. Elephant reserve none, no elephant reserve. UNESCO World Heritage Site none. So in the Manipur, no BR, no TR, no ER and no UNESCO. Okay, two national park in the Manipur, which is marked number 3
location number 3 and location number 4 in the map. Location number 3 is Kebu Lamjao National Park, which is called floating national park. Okay, लोकेशन नंबर 3 इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है. ओके, नंबर 3 इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड नंबर 4 इज सिरुई नेशनल पार्क. ओके, नंबर 4 इज सिरुई या सिरोई नेशनल पार्क. ओके, नंबर 4 इज सिरुई या सिरोई नेशनल पार्क. सिरुई या सिरोई नेशनल पार्क. ओके, एंड रामसर साइट की बात करें तो लोकटक लेक एक रामसर साइट है which is marked in the map. Number 2, location number 2 marked in the map. Okay, location number 2 marked in the map, which is Ramsar site. And some wildlife sanctuaries in the Manipur, some important wildlife sanctuaries: Yangopokpi, Yangopokpi and Sirui Wildlife Sanctuary. Yangopokpi and Sirui Wildlife Sanctuary. Yangopokpi and Sirui Wildlife Sanctuary. Okay, Vanajiva Bharat Wildlife Sanctuary, Yangopokpi and Sirui Wildlife Sanctuary, two major wildlife sanctuaries in the Manipur. Okay, no BR, no TR, no ER. NP 2 है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड सिरोई लिली नेशनल पार्क. ओके, and Ramsar wetland is 1, Loktak Lake, which is marked number location number 2 in the map, and UNESCO World Heritage Site या UNESCO विश्व धरोहर में कोई भी मणिपुर का हिस्सा नहीं है. ओके, talk about major wildlife. Sangai is a type of deer. Okay, Sangai deer, which is called dancing deer and also called broantly deer. Sangai deer called dancing deer and broantly deer is a state animal of Manipur. Sangai deer or antlered deer is a state animal of Manipur and found in only Kebu Lamjao National Park. State animal या Sangai deer only found in Kebu Lamjao National Park. Okay, only found in Kebu Lamjao National Park. Okay, Sangai deer या broantly deer only found in Kebu Lamjao National Park, or this is a state animal of Manipur. Okay, and Sirui lily, scientific name is Lilium macellinae. Okay, Lilium macellinae. Sirui lily is a state flower which also called Lilium macellinae. Sirui lily is a state flower which also called is Lilium macellinae. Lilium macellinae, or found in Sirui National Park या Sirui National Park, which is already marked number 4 in the map. Location number 4 in the map. Okay, and Hologibbon, Pholoris, Stump-tailed macaw पाए जाते हैं. Hologibbon के लिए in the previous class we talk about Hologibbon, and we talk Hologibbon are found in all over Northeast India. Okay, Hologibbon Northeast India के सभी states में देखने को मिलता है. क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, गोर वाइल्ड बफेलो, 6 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल, 4 स्पीसीज ऑफ पिजेंट्स. ओके, 4 स्पीसीज ऑफ पिजेंट्स देखने को मिलती है. एंड अमूर फाल्कन एक छोटा सा पक्षी होता है, स्मॉल बर्ड टाइप होता है अमूर फाल्कन, विच इज ए माइग्रेटरी बर्ड, विच इज ए माइग्रेटरी फ्लाईवे बर्ड. ये मणिपुर में देखने को मिलता है. ओके, अमूर फाल्कन बर्ड देखने को मिलता है, एक छोटा सा पक्षी होता है अमूर फाल्कन. ओके, एंड व्हेन we in later classes about species, we talk about species in the classes of environment which is conducted in October. Okay, in October in detail, like status of species, like endangered, critical endangered, extinct. We talk about later classes of environment. Okay, स्पीसीज की विशेषताओं के बारे में हम इन्वायरमेंट की आगे आने वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे, जो अक्टूबर नवंबर मंथ में देखने को मिलेगी आपको. ओके, संगाई ब्रो एंटलर डियर ये स्टेट एनिमल है एंड स्टेट फ्लावर इज सिरोई लिली. ओके, we talk about forest cover of Manipur. 75% of geographical area are under forest cover and 90% area is hilly area. Okay, 90% area is hilly area.
dense mixed forest, bamboo and teak. Forest mainly in hilly region. Okay, forest in mainly hilly region because 90% area in under hilly region, then remaining 10% area is valley region and remaining 10% में population देखने को मिलती है. तो मेजर फॉरेस्ट कहाँ होगा? इस 10% में तो नहीं होगा. तो मेजर फॉरेस्ट 75% जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो हिली रीजन में देखने को मिलता है. तो फॉरेस्ट मेनली इन हिली रीजन. ओके, लोकटक लेक एंड वेटलैंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट. ओके, लोकटक लेक इज ए रामसर वेटलैंड एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट. एंड challenges: zoom cultivation and illegal logging are major challenges for forest. Okay, zoom cultivation, like how to challenge zoom cultivation? See, zoom cultivation is a type of cultivation where forest cut down and burn and forested land converted into agricultural land. So zoom cultivation is challenges for forest cover. Okay, rich biodiversity and endemic species and found in forests. Okay, 75% for geographical area under forest, so rich biodiversity and some endemic species are found in Manipur. Or forests are important for watershed and tribal livelihoods. Okay, ट्राइबल्स की आजीविका और ट्राइबल्स के जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट. एंड वाटर सेट पे भी डिपेंड करते हैं, जनजातीय आजीविका के लिए इंपॉर्टेंट है और जल सांभर के लिए भी फॉरेस्ट या वन आवरण इंपॉर्टेंट है. ओके, some key facts about Manipur. Capital Imphal, which already marked number 1 in the map, location number 1 in the map. Okay, and area 2200 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, एरिया इज 22,327 किलोमीटर स्क्वायर. shares international boundary with Myanmar, which is 352 kilometer long. Okay, which is 352 kilometer long. Kabul Lamjao National Park, which is marked location number 3, only floating national park in the world. Sangai deer state animal found only floating national park या Kabul Lamjao National Park. Loktak Lake Ramsar site, which is already marked location number 2 in the map. And gateway to east is the More border, trade with Myanmar. Okay, trade with Myanmar and forest cover 75% area, 75% geographical area. Okay, and quick revision, talk about already Imphal. Capital area 22,327 kilometer square. Border, internal border with Nagaland, north border with Nagaland, west border with Assam, south border with Mizoram, and international border east border with Myanmar. Okay, लोकटक लेक के गुलाम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क. लोकटक लेक में स्पेशल यूनिक फीचर है फूमडीज. लोकटक लेक की स्पेशल यूनिक फीचर क्या हो गए? फूमडीज इसकी यूनिक फीचर हो गए. एंड संगाई डियर स्टेट एनिमल है. एंड सिरोई लिली स्टेट फ्लावर है. यहाँ इकोनॉमी डिपेंडेंट करती है, एग्रेरियन इकोनॉमी है. राइस मेन प्रिंसिपल क्रॉप है. हैंडीक्राफ्ट एंड मोरे ट्रेड देखने, मोरे बॉर्डर से ट्रेड देखने के लिए मिलता है. 2 नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विच इज मार्क नंबर 3 एंड सिरोई नेशनल पार्क विच इज मार्क नंबर 4 इन द मैप. 1 रामसर लोकटक लेक विच इज मार्क नंबर 2 in the map. No BR, no TR, no ER, no UNESCO. Forest cover 75% and state animal Sangai deer, state flower Sirui lily. Okay, that's all about Manipur. And in the next class we talk about Nagaland and also talk about Assam. Okay, that's all for the day. Thank you.